Wow, what an amazing open house it has been so far. Uh, Thank you, Suganya, for the wonderful introduction. Hi, everyone. Very good morning. And Praveen, man, you were just awesome. You just blow the show completely. And big kudos to Mukesh Ridhima, for hand holding and guiding you in your wellness journey. So yeah, my name is Parit Agarwal, and this community, wellness question community, helped me to lose around 10 kgs of weight few years back, and I improved my immunity a lot in that process. And currently, me and my wife Ayushi, we are super pumped up, helping people across the world, improving their health and overall well-being. So yeah, without wasting much time, let me start sharing my screen. Okay. Let me know when you all are able to see my screen. Okay, I think it should be visible. ओके फाइन तो हमारा आज का टॉपिक है आई विल कीप अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ so my topic today is root cause of most lifestyle disorder issues, right? And the main objective of my talk today is to help you all understand कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इश्यूज होते हैं तो उसका रूट कॉज क्या है, right? So when we say lifestyle disorder issues, what does it mean actually? So as the name says कि कोई भी डिजीज या प्रॉब्लम जो हमारे एग्जिस्टिंग या पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होती है. For example, what all things can come in this category, like thyroid or diabetes or PCOD or PCOS or fatty liver, or if someone has high cholesterol or high BP problem, or skin issues like severe acne or psoriasis or eczema, or joint pain related issues like osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and many more things. Okay, so या सो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे आज से 40-50 years बैक ये सब इश्यूज रियरली किसी को हुआ करते थे, राइट? सो इन ऑल दीज इयर्स व्हाट हैज चेंज्ड एक्चुअली? ओके, सो व्हाट हैज चेंज्ड इज दैट ऑल ऑफ अस हैव मूव्ड टुवर्ड्स कन्वीनियंस rather than doing the ideal things. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो उसकी वजह से लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया है. एंड वी एंड अप डूइंग और चूजिंग थिंग्स विच आर जस्ट शॉर्टकट्स और मोर कन्वीनियंट टू अस, राइट? तो अगर हम पहले की बात करें, पहले हम अगर हमें ऑफिस के लिए वर्क के लिए जाना होता था, देन वी यूज्ड टू बाय वॉक या हम साइकिल से जाते थे. तो उसकी वजह से बॉडी बहुत ही एक्टिव रहती थी, हमें स्वेटिंग होती थी. बट अब नाउ वी चूज द मोटरसाइकिल और वी चूज द कार. एज अ रिजल्ट ऑफ इट द लाइफ हैज बिकम मोर सेडेंटरी, एंड जिसकी वजह से अब हमें लोगों को मूव करने के लिए हमें स्टेप चैलेंज करना पड़ता है, राइट? अगर आप अम, पहले ऑब्जर्व करें, पहले हम टाइमली सोते थे, टाइमली उठते थे, जल्दी खाना खाते थे, क्योंकि आफ्टर आफ्टर द सनसेट लाइट नहीं हुआ करती थी. उस टाइम पे इन्वर्टर्स की फैसिलिटी नहीं थी, तो अंधेरे में खाना कौन बनाए? और टीवी नहीं हुआ करते थे, तो रात को टाइम पास कैसे करें? तो हम जल्दी खाते थे, जल्दी सोते थे, तो जल्दी उठते थे, राइट? पहले हम लोग मसाले जो रहते थे वो हम घर पे ग्राइंड किया करते थे. बट नाउ बट नाउ वी यूज दी पैकेज्ड मसालास बिकॉज ऑफ लेस टाइम वी हैव, which are having additional chemicals, preservatives and toxins. पहले हमारे घर में या हमारे लोकल एरिया में गाय हुआ करती थी, काउस एंड बफेलोज यूज्ड टू बी देयर, तो वहां से मिल्क आता था. बट नाउ वी यूज मोस्टली दी पैकेज्ड मिल्क, एंड कभी कभार हमें उसका सोर्स भी नहीं पता होता है, राइट? And one thing that has biggest change is that earlier we used to choose slow cooking methods, जिसकी वजह से हमारे खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन हुआ करता था that used to get intact. But now we use pressure cooker or we use microwave ovens to quickly prepare the things or to quickly heat the things up, right? So if you will see that over the past century we have become increasingly dependent upon convenience, राइट? हम लोग फास्ट फूड खाना स्टार्ट कर दिया है, हमारी लाइफ सेडेंटरी हो गई है बहुत, एंड वी आर यूजिंग द लेबर सेविंग डिवाइसेस, राइट? While all of these things have bring a lot of benefits in our routine, but it has also come at a cost to our overall health and well-being, right? And what I majorly believe that all of these things have started increasing a lot of toxicity knowingly or unknowingly in our life,
And what has happened that because of which we have been started moving from ease phase towards the disease phase. What do I mean by ease phase? That there are no health problems, there are no symptoms, we are fully energetic, we have mental clarity, and our body is having optimal health at its peak. After ease phase, then comes the unease phase. What do I mean by unease phase? कि हमें कोई disease नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है, but the body has started showing certain symptoms. तो वो symptoms क्या हो सकते हैं? That we have started feeling fatigue, we are easily getting stressed, low energy levels, mood swings, frequent mood swings, low digestive health, जिसके वजह से gastric issues or acidity issues or constipation or painful periods or irregular cycles, all these things. एंड अगर हम इस टाइम पे अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं अनीज फेज, देन अवर बॉडी स्टार्ट मूविंग टू द डिजीज फेज. एंड व्हाट डू आई मीन बाय डिजीज फेज? दैट्स वेयर द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इश्यूज और द क्रॉनिक इश्यूज स्टार्ट्स हैपनिंग. तो फॉर एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस, स्किन रिलेटेड इश्यूज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इनटू दिस कैटेगरी, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर अगर माना किसी को डायबिटीज डिटेक्ट होती है, सो इट इज नॉट बिकॉज कि पिछले 3-4 मंथ्स में उन्होंने क्या चीजें चेंज करी हैं. जो भी चीज ऐसा 3-4 महीने में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डायबिटीज है, इट इज नॉट द थिंग, राइट? दे हैव बीन फॉलोइंग अ सर्टेन unhealthy lifestyle or poor lifestyle from a very long period of time, maybe 3-4 years or 5-10 years, जिसकी वजह से the body has started moving from ease phase to unease phase and to the disease phase, and now they have started it has started reflecting in their blood reports. Okay, so where does the root cause lie of all these lifestyle disorder issues? The root cause क्या है? What is the crux? I believe that it highly lies in our gut system, या जिसको हम digestive system भी बोलते हैं, right? That's where the root cause lies, and we will see कि ऐसा क्यों होता है. But before that, let's first understand कि gut health and digestive system होता क्या है. So I'll try to keep the things very simple so that you can understand. तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे लेफ्ट में, सो सो फ्रॉम द ओरल कैविटी हम लोग खाना खाते हैं. ये जो ऑरेंज पाइप दिख रहा है, दिस इज द फूड पाइप, राइट? हम लोग खाना खाते हैं च्यू करके, तो फूड पाइप से खाना यहाँ पे आता है. इट इज अटैच टू दिस थिंग कॉल्ड स्टमक. ठीक है, स्टमक के अंदर हमारे एसिड्स होते हैं, तो एसिड्स जो है वो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, एंड उसके बाद बाकी के जो हमारे कुछ ऑर्गन्स रहते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं. एंड फ्रॉम द स्टमक अवर फूड गोस इनटू दिस स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो आप नूडल्स जैसे देख रहे हैं ना, तो दिस इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, बट दीज आर नॉट नूडल्स. ओके, सो इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल the further breakdown of the food happens, and the nutrition extraction from the food happens from the small intestine, right? And from the small intestine then the food goes into this green color की यहाँ पे लाइनिंग देख रहे हैं. From the food goes, the rest of the food goes into this green thing which we call it as a large intestine or colon. और तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फर्दर न्यूट्रिएंट्स का कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड आफ्टर पासिंग द फूड फ्रॉम दिस लार्ज इंटेस्टाइन इट गेट्स आउट ऑफ अवर सिस्टम थ्रू एनस, राइट? तो uh, तो अगर हम हमारे इंटेस्टाइन्स की बात करें, वहां पे खाने का तो ब्रेक डाउन हो रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन is also happening within these intestines, and those and that nutrition जो वॉल्स होती है इंटेस्टाइन की, सेंड दैट न्यूट्रिशन इनटू अवर ब्लड स्ट्रीम. और जब ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिशन जाता है, देन इट गोज फर्दर इनटू अवर फर्दर ऑर्गन्स, एंड दैट्स हाउ वी गेट द एनर्जी एंड अवर बॉडी रन्स, राइट? So in a nutshell, if you will understand, the responsibility of this gut system or the digestive system is to break down food, absorb the nutrients, and eliminate the waste from our body. Okay? So now the question comes कि जब हम बोलते हैं कि हमारी गट खराब है या हमारा पेट खराब है, so what does it actually mean? What does poor gut health actually mean? What does it actually mean is कि हमारे जो intestines हैं, right? They have something called gut microbiome. What is gut microbiome? In a simple terms, it's a combination of good bacteria and bad bacteria. कुछ अच्छे बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज हैं. तो जब द क्वांटिटी ऑफ द बैड बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू गुड बैक्टीरियाज, when the quantity of bad bacteria is way more than the good bacteria,
that's where a kind of imbalance starts happening in our gut system. और जब ये imbalance बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से along with the nutrition, the harmful toxins from our intestines start releasing into our bloodstream. And that's where all the problem starts. जब ये toxins हमारे blood stream में जाते हैं, that's where the problem starts. So what does these toxins do in our bloodstream? So these toxins, जब blood stream में toxins आते हैं, they start hitting and affecting our all the organs. चाहे छोटे से छोटा ऑर्गन हो या चाहे बड़े से बड़ा ऑर्गन हो, राइट। अगर वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं तो वी गेट एक्सपोज टू वीक इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ होने लगता है। इफ दे आर अटैकिंग अवर थायराइड ग्लैंड, तो उसकी वजह से हमें हाइपोथायरॉइड या हाइपरथायरॉइड या फिर हाशीमोटो डिजीज हो जाती है। इफ दे आर अटैकिंग अवर जॉइंट्स, इट कॉजेज ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस, right? If it affects our skin severely, it causes severe acne or psoriasis or eczema, right? और जब ये क्वांटिटी जो है बैड बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा हो जाती है हमारे हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर ही, तो उसकी वजह से कई बार हमें कॉन्स्टिपेशन और अल्सर्स और एक्सट्रीम केसेस में आईबीएस इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर ये जो टॉक्सिन्स है हमारे हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेंगी, देन इट कॉजेज डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड अदर ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, राइट। तो जब भी हमें ये सब इश्यूज होते हैं, दीज क्रॉनिक इश्यूज और दीज लाइफस्टाइल इश्यूज हैपेंस, देन व्हाट वी नॉर्मली डू इन दैट केस, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, व्हाट वी डू, we generally take medicines, correct? But what we need to understand that the medicines just suppress the symptoms, they doesn't resolve the root cause. For example, माना किसी को, I will take a couple of examples. Let's say किसी को thyroid है and they are taking Tylenol for that, correct? Till the time they are taking Tylenol, they will be fine. And as long as they will stop it, again their thyroid levels will go up, correct? हमारे किसी को डायबिटीज है, राइट? इफ दे आर टेकिंग द डायबिटीज मेडिसिन, टिल द टाइम दे आर टेकिंग इट, their sugar levels in the blood will be normal. But as soon as they will stop it or they will be off the insulin, again they will spike up. In case of osteoarthritis, the medicines we take, that are the painkillers, they just suppress the pain, correct? But all these things has it resolved the root cause? Root cause क्या था? Root cause was that in our gut microbiome, in our gut system, the bad bacteria are more and the good bacteria are very less, right? So what we need to actually work upon is bringing that balance back. Okay, if we are able to bring that balance back, then all these issues can be resolved over a period of time. So let's understand कि what causes this disbalance. ये disbalance create क्यों होता है bad bacteria और good bacteria का in our gut microbiome? So the first thing is the diet that we normally take. If it is high in processed food or refined sugar or unhealthy fats, it triggers the bad bacteria. Surprisingly, if we take any drugs or medicines or antibiotics, it also increases the bad bacteria and kills the good bacteria. Third is chronic stress, right? If you see कि हमारा जो gut है, हमारा जो digestive system and our brain, they are connected with a nerve called vagus nerve. इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी को भूख लगती है, राइट, देन उनको इरिटेशन होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आवर स्टमक, आवर गट एंड आवर ब्रेन, दे आर इंटरकनेक्टेड, राइट। तो अगर हमें क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक रहता है, इट काइंड ऑफ स्टार्ट्स अफेक्टिंग आवर गट ऑल्सो एंड इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ बैड बैक्टीरिया इन आवर गट। Okay. Lack of sleep again, sedentary lifestyle, because when we do exercise, it removes the toxins from our body and it increases the functioning of our organs, right? Excessive alcohol consumption and smoking, that thing we already know. If we get any kind of infection, that also triggers the bad bacteria's growth. And environmental toxins, which I will talk about the key how environmental toxins affect our gut in further slides. Okay. So now the question comes how to bring this balance of good microbes and the bad microbes, or for the good bacteria and the bad bacteria back. So what I believe, if we follow our WQ lifestyle, right, this balance can be brought back, right? We saw the example of Praveen. This balance he was able to bring back in his life because of the WQ lifestyle. So let's talk about key.
What are the different things we should focus upon as a part of WQ lifestyle? So the first pillar that comes is the balanced diet and nutrition. What do I mean? What all things come into it? That first thing we need to understand is eating right versus eating less. If we eat less, right, then our body will be deprived of nutrition. So the idea is not कि हम कम खाना खाएं. The idea is कि हम सही खाना खाएं. Look out for our food plates. The second thing comes is what to eat, when to eat, and how much to eat. क्या खाना है, कितना खाना है, और कब खाना है. And the third thing we need to understand that all the healthy things are not healthy for unhealthy people. For example, milk. Milk is healthy, but it can not be healthy for someone if someone is having lifestyle disorder issue. This is just an example. Okay. The next thing comes that is exercise, right? So when I talk about exercise, it consists the structured exercise also and non-structured exercise also. What do I mean by structured exercise? कि हम डेडिकेटेडली हाफ एन आवर और 45 मिनट्स और 1 घंटा डेली बेसिस पे हम अपनी एक्सरसाइज रूटीन करने के लिए निकाल रहे हैं. दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज. इधर यू कैन डू कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा और डांस फिटनेस. इट कुड बी एनीथिंग. What is non-structured exercise? It means that keeping your body active throughout the day. For example, if you're attending office calls, attend them while standing, right? If you are cooking at home या आप चाय या फिर दूध के उबलने का वेट कर रहे हैं, अगर आप किचन में हैं, तो incorporate some mini workouts in that. Maybe you can do squats, maybe you can do wall squat and multiple things to keep your body active, right? अगर आप किसी का वेट करें, आप खड़े हैं, तो rather than just standing, just walk a little bit or do squat jog. ओके. माना आप ऑफिस में अगर आप लिफ्ट्स यूज करते हैं, सो रेदर देन यूजिंग द लिफ्ट्स यूज स्टेयर्स. अगर आपका ऑफिस लेट से 10th फ्लोर पे है, सो गो टिल 4th फ्लोर बाय बाय स्टेयर्स, एंड देन फ्रॉम 4th फ्लोर यू कैन टेक द लिफ्ट. ओके. कुछ ना होने से कुछ तो होना अच्छा है, राइट? अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो पार्क योर कार अ बिट डिस्टेंस फ्रॉम द एंट्री गेट सो दैट यू कैन वॉक अ लिटिल बिट, राइट? अगर आप कहीं पास में शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, कुछ ग्रोसरी लेने के लिए जा रहे हैं, देन प्रेफरेबली गो बाय वॉक, डोंट टेक मोटर व्हीकल. अगेन चूजिंग द राइट थिंग वर्सेस बीइंग चूजिंग द कन्वीनियंस थिंग, राइट? अगर आप घर पे बात कर रहे हैं, टेक द फोन कॉल्स वाइल यू आर मूविंग, नॉट बाय सिटिंग. ओके. Now the next thing comes, that is stress and sleep. So let me help you understand in a brief way that why does stress happen. What I believe ki our thoughts and feelings cause stress. Our thoughts and emotions cause stress. Thoughts means the way we think, and emotions the way we feel. For example, husband wife है, साथ में झगड़ा हो गया, again thoughts go on haywire. बच्चे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे, हम पूरे आगे तक की पूरा सोचना स्टार्ट कर देते हैं. Then our thoughts get haywire कि बच्चे सुनते नहीं है. अगर बॉस के साथ कुछ हो गया, बॉस ने कुछ बोल दिया, it starts affecting our thoughts and our feelings as well, right? So if we can learn that how to manage our thoughts and emotions and provide the right nutrition at the same time to our body, we can manage stress. Praveen beautifully shared few things he has done to control his stress levels, right? Right? Maybe the person who has invited you, they can help you to understand what are the best practices for you to manage your stress and your sleep. Okay. Now the next thing, the another pillar that comes is creating a non-toxic environment, right? So we need to understand, we need to evaluate first कि हमारे घर के अंदर क्या क्या टॉक्सिन्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल मेनी टाइम्स दी प्रोडक्ट्स दैट वी यूज, दोज आर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स एट होम. अगर हम क्लीनिंग के लिए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसके अंदर केमिकल हो सकता है. अगर हम स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसके अंदर केमिकल हो सकता है. अगर हम बेथिंग के लिए प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसके अंदर केमिकल्स हो सकता है. वॉशिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें केमिकल हो सकता है. सो अंडरस्टैंड सी कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, आर दे ऑर्गेनिक और आर दे हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, right? Then the second thing that is very high in our home is the use of the plastic, right? If you use plastic bottles for drinking water, replace it. Replace it with either with glass bottles, glass water bottles, or metal, or the copper one. And also घर में जो हम जो हमारे कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम दाल वगैरह, दाल, लेंटिल्स एंड पल्सेस स्टोर करते हैं, लुक आउट फॉर दोज थिंग्स. आर वी यूजिंग प्लास्टिक वन, और
If you're using plastic one, better to change it to the steel one. And the third most important thing, which we have been doing unknowingly from many, many years, is our the way we cook food at home, right? What are the normal ways we cook food at home? Normally तीन तरीके हैं. या तो हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं, या तो हम एल्यूमिनियम की कढ़ाई यूज करते हैं, या फिर हम नॉन स्टिक जो कुकवेयर्स होते हैं, तवा होते हैं, वो यूज करते हैं. All of these things kind of release toxins within our food. For example, the aluminum kadai, the aluminum vessels, they leach aluminum in the while cooking the food. तो अब अगर जब हम वो खाना खाते हैं, it kind of increases, the toxicity within our system. Same thing happens with non-stick. Same thing happens with pressure cooker. So understand that how you can revamp your kitchen. हम फोन revamp करते हैं. How about revamping our kitchen? Then the next thing comes is the community support. Why is it important? अगर आप नोटिस करें कि जब भी नया साल स्टार्ट होता है, the gym subscriptions are at the highest peak, right? And by the time March comes, only 50% of the people continue to go. And we are in May right now. In May and June, hardly 15-20 people start continuing to go. So why does this happen? We need to understand that getting out of track or getting demotivated is a default nature of a human being, right? But if you can get a community support, if you get chance to connect with them frequently, our motivation lasts longer. That's why people who join this open house forum every week, they are able to continue those habits for a longer period of time than people who don't join. Okay. So I would like to end with this, right? When it comes to improving lifestyle disorders, there are no shortcuts, right? It can only be done by forming right and sustainable habits. And changing old habits and adopting, building new habit, it takes time. अगर हमारी कोई हैबिट्स हैं जो हम पिछले 5-10 साल से फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उन्हें चेंज करना है, it takes time. It is not going to happen suddenly. And what I believe, it takes at least 3 to 4 months to change those old habits and building new ones. And I also believe that it cannot be done alone. One needs both a coach as an accountability partner and a community for constant group momentum support, right? So I hope I have been able to add some value to my presentation and my talk today. And yeah, back to host.